अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओज़ इस्तांबुल ग्रुप से लाइव ब्रॉडकास्टिंग के साथ मैं हूँ हिरा ख्वाजा। आज ओज़ इस्तांबुल ग्रुप के हेड ऑफिस में हमारे मेहमान ख़ुसूसी इरफान फ़ानी और मारूफ अदाकार, हदायतकार और फिल्म प्रोड्यूसर सर हमीद शेख को भरपूर तरीके से खुशामदीद कहते हैं। मिस्टर हमीद शेख जो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बनाई जाने वाली फ़िल्म खुदा के लिए, कंधार ब्रेक ऑपरेशन, O21, मोर और अब्दुल्ला जैसी मशहूर फिल्म्स में अपनी भरपूर परफॉर्मेंस दे चुके हैं। डिफरेंट PTV ड्रामाज़ में भी भरपूर परफॉर्मेंस अदा कर चुके हैं। आज हमारे साथ ये ओज़ इस्तांबुल ग्रुप के हेड ऑफिस में मौजूद हैं। आइए हम आपको अपने टूरिज़्म ऑफिस का विज़िट करवाते हैं। दिस इज़ यस प्लीज़ सर। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर पहुँच के, और आप लोग देखें कि पाकिस्तान और तुर्की जिस तरह से हम भाई भाई, मैं समझता हूँ कि हम भाई भाई हैं। बचपन से हम कमाल अतातुर्क के हवाले से जो है पढ़ रहे हैं और जानते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आया इस मुल्क में आके। बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली पाकिस्तान के साथ जॉइंट वेंचर्स में, और पाकिस्तान में जो हमारी जितनी इज़्ज़त यहाँ पर मुझे मिल रही है, जिस खंदा पेशानी से हमें यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है, तो माशाल्लाह हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए। और बहुत ही मज़ेदार जगह है और बहुत ही कमाल का एक कल्चर है यहाँ पर। आपको यूरोपियंस भी मिलेंगे और यहाँ पर बहुत ही प्यारे और दिल के साफ और बड़ी मेहनती कौम जो कि आपके साथ यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी जगह पर आना और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। Thank you so much. We appreciate your activities regarding Pak-Turk relationship and international activities. Thank you so much, sir. Welcome, welcome. So, this is our beloved honorable lawyer, Mr. Serkan. This is Mr. Gökmen. He is the general director of the Ankara office of Istanbul. If you like, we can go. Well, I'm from Balochistan. It's a part of Pakistan's biggest, largest province, which is border with Afghanistan and Iran, and we have the Arabian Sea. And regarding, beside that, we have all the regional borders with all the provinces like Sindh, Punjab, and NWFP. There's another province which is the Imran Khan is from that province. So we have connected with all the cultures and all the provinces. Şimdi ya o da nereden olduğunu anlattı aslında, Pancap bölgesinden vesaire. Şu an hep birlikte aslında kültürleri birleştirmiş olduk diyor. Kendisi bundan çok Kesinlikle. Sir, we also used to see your Pakistani dramas as well. So we are very happy to have you here. Los Angeles 2 years back, and I'm working in LA now. I'm doing some movies. I'm working for Fox now as a consultant. मैं कोयटा का रहने वाला हूँ, so I speak 9 languages. उसकी वजह से I got a very important job as a consultant. एक सीरियल बन रहा है जैक ब्रिजेस के साथ. It's called The Old Man. So I'm working as a consultant and I'm teaching 4 big stars of Hollywood, and I'm teaching them the language here. That's great. That's great. Thank you. Kendi ofislerimizde, İstanbul ofislerinde görmekten, Türkiye, Pakistan arasındaki ilişkilere sunduğu katkılarından dolayı çok memnun oluyoruz. He's saying he's very happy and feel honored that you're here in the Istanbul Group of Companies, and they are very happy about Pak-Turk relationship that you're giving your leaders. Thank you for honoring me and having me here, and I believe this is we have a future. This is for sure. I see, because we have been watching all the TV productions which are very impressive, especially Imran Khan brought, my Prime Minister of Pakistan, he brought this serial called Artabul, which has a very big influence of your country, not only your country but the culture and the art form, which is very important. There should not be only religion, there should be art exchange as well. Yes. So I'm here, I'm planning something. I was talking to Irfan and my friend regarding the joint ventures. There's not only there's a big possibility, we can do something which can make big waves and which can bring up big money for both countries, and there are many stories to tell.
O da çok memnun oldu. Çok teşekkür ediyor onlardan dolayı. Şimdi bu Emrah Bey'in de Ertuğrul Gazi getirdi ya dizisini Pakistan'a. Bu konuda da çok mutlu ve burada da hani birkaç bir şey de yapmak istiyor Amir Bey. Hani sadece din konusunda değil, yani biz kültürlerimizi de birleştirmeliyiz ve birbirimize işte mali maddi katkılar sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bundan 2 gün önce de zaten Diriliş Ertuğrul dizisinin bir oyuncusu bizi ziyaret etti. Burada kendisi de arkadaşımız, dostumuzdur. 2 days ago, from Diriliş Ertuğrul, Mr. Cavi Çetinginer also visited us. Aslında konuşmaya burada da devam edebiliriz ama we can go to the meeting. Fine, I'm seeing everyone. इसके साथ ही ओज इस्तंबुल ग्रुप से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।